Hello, everyone, and welcome. Finally, we are live back again after 10 days. And before my luck runs out any further, I have Nikhil Bhai also with us to revive that luck back again. How are you doing, Nikhil Bhai? Don't tell me about luck, dude. The first T20, I could have had banners across platforms if the order was not changed. But maybe the big one, if it has to come, it will come soon, hopefully. Yeah, I'm sure. Let's just wait for a minute or two before Yes, everyone joins in, and I will just yes, inform them to join in. yes. And we can have a few questions as well till then if people want to already send them. Yes, for Because I have sure. also just tweeted. So hopefully, okay. I could have just said live now. What are your thoughts for this game? First thing, how much of rain, no rain? Are we going to see a full one, or how is this one going to go, and how does that impact the way the team strategize? The weather looked clear for the entire day, for the entire game actually. So hopefully that way we are good. Even now, Hmm. if I'm just checking the weather again, it says it's fine for the next 4 hours. There is scattered showers, Hmm. but that's done. We've passed that stage. And how does India use their bowlers? Because like last time we saw Umran got just one over, Akshar got just one over, and then on the other hand, Hardik bowled so many overs. So how do you see that changing if it's a full game? I think it was also something that Hardik had said that Umran likes to wants the older prefers the older ball. Hmm. So they were very keen on not giving him the new ball, which even Sunrisers didn't do that. So Hmm. I think with Akshar, it's very important that he strikes well in the first over, because if not, then because of the options that India have, even Rishabh went to Lalit Yadav more than Akshar at times. So uh, Right. that is something that Akshar will have to fight because it's a small ground. So the lengths have to be very good for him to really come off. Something what Chahal did the Hmm. other day, he didn't give a runs and also picked up a wicket. So having Akshar doing that job will be very critical in the middle overs. So do you feel like if like I've seen this pattern across captains with Akshar that if he gets hit in the first over, then he just similarly in the second over. So do you see like this is the best kind of opposition that he can bowl against with a host of righties and people who don't like playing spin? So how do you see that panning out today in case he does not have a great start? Firstly, I don't think Ireland plays spin that badly. In the last game, we saw them play spin very well, and also it's a shorter Hmm. boundary, so that the shorter ground makes it very Yeah. difficult for the bowler because then the batter just has to get his area right. If he Hmm. gets his area right, and I don't think Tector is a very good guy. Like all of those who have followed him in the coming years know that while batting first, even Hmm. now that he's batting at four, he's not somebody that you drop because he has Right. those skills. He's played the spinners well whenever they play Afghanistan or any other side with more spin. Hmm. He tends to do better as compared to the rest. But again, against good bowling, you'll always be found out. But I don't think India can take it easy Hmm. in terms of spinners will do the job. I think pacers only will have to strike up top. Right. Okay. I think we have a host of questions already. So, firstly, thank you to everyone who's joined in, and I will start looking at the questions. So, the first Yes. one is, what if India bat first? Can they make a huge score? And in that case, do we need to take more batters and need to go with selected bowlers? And how does that make it more difficult to make a team too? Yeah, definitely. But then that increases your chance of getting a GL because if India bowl first, then you will find many common teams. But if they bat first, then it's a great chance for you to pick out the Hmm. differentials. Something like a Craig Young, Joshua Little, they could be very good picks. Even one of them or both Hmm. of them, because there is some amount of swing up top in the first few overs while batting first at least. Again, it depends a Hmm. lot on how the conditions are, and then you can take a call. But Craig Young has still been in form, and he took 2 wickets in the last game as well. So I Hmm. think both Ireland and India will be wary that they have to use him very smartly. So batting first, I think it's a better option also for India to try out because usually Hmm. batting first is the harder thing to do.
and we saw that with South Africa as well. Right. And apart from that, there's the okay, yeah, I'm sorry. All of you, please let me know English or Hindi. You guys can put it in the comment. Yeah. जो भी majority है हम उसमें बात करेंगे. हमको कोई तकलीफ नहीं है. मुझे last time किसी ने बोला आप निखिल भाई के साथ और सबके साथ सिर्फ इंग्लिश में प्रीव्यू करते हो, तो मैं डबिंग के लिए आ जाऊं हिंदी में. तो ऐसी कोई आपका जैसा सवाल हमारा वैसा आंसर बात नहीं है. तो हम कर लेते हैं. या Just everybody who's on the live, please let me know in the comments whether you want me to या speak in English, Hindi, and no other language. Sorry. Okay, ठीक है. So we'll go in Hindi for now. Then if somebody does not understand something, please message या us and happy to translate it in English. तो या अगला सवाल है players according to me Tector, Adair, Little, Young and just one batsman and three bowlers. ये सवाल इफ इंडिया समझ बैट में नहीं आया. फर्स्ट, कुछ समझ पा रहे हो आप निखिल भाई? बराबर है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो उनके आयरलैंड के 4 प्लेयर होंगे, टेक्टर, अडेर, लिटिल और यंग। हाँ, ओके ओके तो ओके. मेरे हिसाब से इसमें एक बॉलर एक्स्ट्रा है, अगर आप वैसे हम्म देखें तो। अगेन जैसे मैंने कहा, यू कुड गो विद बोथ। अगर आपको लगता है कि और कोई बैटर सेकंड इनिंग्स में रन नहीं बनाएगा तो उनके साथ आप जा हम्म सकते हो। और नहीं तो अभी कैम्फर तो खेल नहीं रहे, तो आई थिंक टेक्टर, अडेर और यंग तो सभी के टीम में होंगे। आई डोंट थिंक दैट हम्म इज a doubt. Gareth Delany, I think, is an option that you can try. मुझे पता नहीं वो कितनी बॉलिंग करेंगे, बट ही कैन डू। कितने करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट ही कुड बी हैंडी, स्पेशली इफ आयरलैंड आर चेजिंग। नंबर 3 पे Who बैटिंग is that? करेंगे। We lost you in the middle. Your the name we lost you at the name. सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah. या सो सेइंग टेक्टर, अडेर और यंग तो सभी के टीम में होंगे। Hmm. गैरेट डिलानी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए कुछ अलग करना हो तो। Hmm. Okay, got it. Next question is what rule should we follow for GL? Same CVC, risky in all 20 teams, or different CVC in all 20 teams? हाँ, तो ये I आंसर think पहले आप ये दीजिए तो सर। आई थिंक आपको इसके साथ एक मिक्स के साथ जाना पड़ेगा. एक एंड पे आप ये सोचिए कि अगर आप वो प्लेयर पे बैंक कर रहे हो आपको जीएल लाने के लिए, कि आपको लगता है कि आप अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे एंड सेम वही प्लेयर के साथ जाओगे, या आप दूसरी तरफ अलग अलग कौन प्लेयर बदलो. सो डिपेंड्स टोटली ऑन द सिनेरियो. लाइक हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ठीक है हम क्रिस्टियन को भी रखेंगे और अडेर को भी रखेंगे, बट फिर हम ये नहीं सोचते बात कि अडेर ही क्रिस्टियन के सामने बॉलिंग करने वाला है, तो सक्सेस तो दोनों में से एक को ही मिलेगी. तो आप वो हिसाब से सोचिए कि आपको किसको लेना है क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक गेम में 12 या 13 बैटल्स ही होते हैं और दोनों प्लेयर में से एक ही बंदा वो बैटल जीत सकता है. तो अब वो हिसाब से अपने जो कॉम्बिनेशन है आपकी टीम में, वो हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करो. बिल्कुल सही है। और कुछ कुछ सो आई कुछ कुछ थिंक गेम्स दैट इज में द वे आपको आउट. पता होता है कि कैप्टन कौन होना चाहिए। जैसे अगर जो थर्ड T20 हुआ इंडिया श्रीलंका वुमेन्स का, तो आपको पता था आपके पास ऑप्शंस में 2 या 3 नाम ही हैं। हरमनप्रीत कौर है, दीप्ति शर्मा है और चमारी अट्टापट्टू। तो फिर ये हम्म आपको फिर इवेंचुअली वो कॉल गट पे होता है कि वेदर आपको सभी टीम्स में उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। अब मेरा नसीब अच्छा था, मैंने चमारी अट्टापट्टू को सिर्फ टीम 1 में कैप्टन रखा। बाकी सब में कौर और इंडियन बॉलर्स थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंडिया अच्छा करेगी। बट फॉर सम रीजन मुझे लास्ट मिनट चेंज भारी नहीं पड़ा और मैंने चमारी को कैप्टन रखा, तो मैं वो गेम अच्छे से जीत गया। तो गट फील भी होता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू सी कि कितने अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हैं उस गेम में और उनका क्या रिस्क है। जैसे अभी एक किशन हो गए, एक सूर्य कुमार हो गए, इनका कितना रिस्क है, एक क्रेग यंग का कितना रिस्क है, वो इनफॉर्म प्लेयर है। तो आप उनके साथ भी कैप्टन जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंडिया जीतेगी, फिर भी आप उनके साथ कैप्टन जा सकते हो, क्योंकि अगर वो चलते हैं और अगर ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या नहीं चलते, तो जो कुछ स्टिल विन। तो इवेंचुअली आप कैसे लीग्स खेल रहे हो और आपको क्या हम्म लगता है गेम में क्या होगा, उससे आप बैक कीजिए। एंड आई थिंक ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि क्या आपको ऑल आउट जाना है, कि ये आप 1000 रुपए डालोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वापस नहीं आए, क्या आपको या चाहिए कि आपको रिकवरी मिले. तो वो हिसाब से आप ऐसे प्लेयर्स को लो जिनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ऑलराउंडर्स बॉलर्स. तो वो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो एंड वो हिसाब से बाकी चीजें देखिए. बिल्कुल। निखिल भाई,
गुजराती में बोलो, शिवम पटेल fan to play. Shivam, so Nikhil Bhai is a big fan of fan to play, so we love to read that name every time. And they have been very supportive to us throughout the Yes. last season. So I'm sure Nikhil Bhai is going to give us two great words in Gujarati to pull them off. नहीं नहीं બિલકુલ સહી કહા આપને और शिवम भाई તમને ખબર જ છે સેકન્ડ ઇનિંગ્સ રમવાની એક જ જગા છે ઈચ ए फैन टू प्ले अगेन बीइंग वेरी स्मार्ट वेरी ऑनेस्ट आप सच्ची में बहुत लोग अगर सेकंड इनिंग्स नहीं खेलते हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन प्योरली बिकॉज वन यू नो द कंडीशंस वेरी वेल तो फिर आपको वो अननोन जो सबसे बड़ा अननोन क्रिकेट में होता है कंडीशंस अगर आपको कंडीशंस पता है तो फिर आप बिल्कुल सेकेंड इनिंग्स में हल्ला मचा सकते हो दो तीन टीम के साथ भी खेल सकते हो इन्वेस्टमेंट भी वैसे कर सकते हो और लीग्स फिल होती है अब बहुत बार मेरे पूरे मैच का इन्वेस्टमेंट निकल गया है फैन टू प्ले पे इन द सेकेंड इनिंग्स मैंने बहुत दफा शेयर भी किया है वो तो हाँ कमिंग बैक टू गुजराती अगर તમને ગેમ ખબર છે આવડે છે તો પછી રમો That's a different twist to this life. Next one, 32 almost came out. What is 32? I need more definition on that. I'm sorry. Then we have, you are like a real team provider, not like others who give options of all 22 players. I think देखो यार, at the end of the day आप 22 players हैं मैच में, आप 3-4 players ऐसे ही eliminate कर सकते हो because you know that those players are not going to play any kind of important role. Maybe you know Dinesh Karthik second innings में important role नहीं play करेंगे. Maybe you know Josh Dockrell is not bowling. You know Garrett Delaney is not bowling much. So you have to see, आप ये देखो कि आप वो 22 players में से 3-4-5 खुद ही एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको पता है कि वो सिर्फ 20% सिनेरियो में उनको चांस मिलेगा एंड देन आप खुद ही वो 17-18 ऑप्शन के साथ बचते हो. आई डोंट थिंक एनीथिंग दैट वी डू इज रॉकेट साइंस यार. खाली ये फर्क है कि हम बहुत बार गलतियां कर चुके हैं तो हमें पता है कि वो गलतियों से कैसे आगे बढ़ना है. बस वही फर्क है. बाकी जो हम करते हैं वो बाकी सब लोग खाली प्लेइंग 11 टॉस कंडीशंस अगर आप सब डेटा फैक्टर देख पाओ तो आप भी वही चीज कर सकते हो. बिल्कुल और काफी जगह ज्यादा ऑप्शन देने का कारण ये होता है कि कभी कभी आप जो बोलो वो लोग सुनते भी नहीं है लोग गलत टीम को गलत कॉन्टेस्ट में डाल के फिर बोलते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया बट अब अगर आप नहीं सुनोगे ढंग से नहीं फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शंस तो फिर इसके लिए लोगों को ज्यादा ऑप्शन देने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें नहीं पता आप कौन से लीग ज्वाइन कर चुके हो या आप कौन से टीम से खेलने वाले हो तो वो चीज़ भी आपको हमें और ऐसा होना चाहिए कि किसी पे रिलाय करें इन्फॉर्मेशन के लिए टीम के लिए नहीं वो कैसा सोच रहे हैं ये चीज़ आप एक रेफरेंस ले लो जैसे मैंने खुद बात बहुत बार कहा है कि अगर नेटवर्क की गेम्स होती हैं तो मैं विदेन की टीम से रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि मुझे उनके टाइप की सोच भी एक पसंद है कि ये मुझे पता है इनकी सोच रिस्की सोच है तो अगर मुझे रिस्की जाना है तो कैसा जाना है या क्या मेरे पास ऑप्शन है तो ये मैं चाहूंगा कि सभी लोग करें आप सभी की टीम्स देखिए मैं तो कहता हूँ 1000 लोग अगर टीम दे रहे हैं तो सभी की टीम्स देखिए बट रेफरेंस के लिए इवेंचुअली करिए वो जो आपका मन कहता है क्योंकि वही आपको फिर जिताएगा नहीं तो कॉमन टीम हो जाएगी सबकी Correct. If we should go with one among Avesh or Umran, who should it be, or do you think you're convinced enough to go with both? एक तो आई थिंक आपका ऑब्वियस चॉइस आवेश खान होगा अगेन मोर सो इफ यू बोल सेकंड उसके बारे में ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है क्यों और उमरान देखो काफ़ी अच्छा एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस हो सकता है बट अगेन यूसेज पे बहुत डिपेंड होगा पिच कैसी है उन्होंने पहला ओवर कैसा डाला है सामने कौन खेल रहा है क्योंकि पेस ट्रबल कर सकता है आपको पर अगर शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और आपकी लाइन सही नहीं है तो वो पेस ट्रैवल भी करेगा तो जो हमने उमरान के साथ देखा भी है बहुत बार कि जब वो लेते हैं तो 3-4 विकेट लेके जाएंगे पर नहीं लेंगे तो 40-50 रन भी खा सकते हैं वो तो दैट इज व्हाट यू गेट विद एक्सट्रीम पेस तो अगर आप मैं कहूँगा स्मॉल लीग या मिनी जीएल्स खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप पहला प्रेफरेंस आवेश खान को दोगे पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं उमरान बहुत अच्छा करेंगे तो आप मिनी जेल्स में उन्हें वाइस कैप्टन बना के भी चल सकते हो एक चीज सिर्फ आप याद रख सकते हो कि अगर आप कभी किसी प्लेयर पे रिस्क ले रहे हो और वो बहुत ज्यादा रिस्की है तो उसे कैप्टन वाइस कैप्टन करके और रिस्क मत बढ़ाओ यू कैन स्मार्टली मेक अ सेफ गाय एज अ कैप्टन एंड हैव दैट रिस्की ऑप्शन एज वेल ताकि वो ना भी चले तो भी आपको रिकवरी मिल जाए बट अगर आप रिकवरी नहीं देख रहे तो डेफिनेटली उनके साथ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल जा सकते हो
ट्रू, वेरी ट्रू। लाइक हमने स्टार्ट में मेंशन किया, आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको क्या Yeah. एक्सपेक्टेशन है वो Yes. लीग ज्वाइन कर यू कैन नॉट हैव वन रेसिपी फिट्स ऑल फॉर एवरीबडी, सो वो आप अपने हिसाब से सोचिए। एंड ओके, थैंक्स फॉर डिकोडिंग दिस, सुमन। आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। Exchange 22 picks for this match. I think it's very important for you to figure out कि अगर movement है up front तो आप फर्स्ट इनिंग्स के बॉलर्स के साथ जाओ, वो केस में देन यू कैन सेल द बैट्समैन दैट यू आर गोइंग आफ्टर। एंड ये बात भी आप सोचिए कि आप जो बॉलर को ले रहे हो या आप जो बैट्समैन को ले रहे हो उसके अपोजिंग जो बंदा है आप उसको सेल करिए। लाइक अगर आपको पता है कि समझो आज हैरी टेक्टर चलने वाला है, तो अगर आप हैरी टेक्टर को बाय कर रहे हो तो वही सिनेरियो में गो अहेड एंड सेल बिकॉज यू नो दैट यू आर बैटलिंग अ वन अगेंस्ट वन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट, ताकि अगर समझो हैरी टेक्टर सिर्फ उतने रन देकर ही चला गया जितने का आपने उसको बाय किया, फिर भी अक्षर पटेल आपको दूसरी तरफ वो कवर करके दे देगा बिकॉज ही प्लेड हिम आउट। सो वो हिसाब से सोचकर आप अपने बाइस करिए। And oh god, now there are quite a few questions. India's opted to bat. Just to put it out there. Okay, India's opted to bat. Okay, so guys, we'll just discuss the team, then we'll come back to all your questions. And let us just look at the team then. Is there any changes in the playing 11? India opt Not to yet. bat first, overcast conditions. Okay, we'll just take a few more questions then till we have the playing Yeah. 11. Can we make Akshar Patel VC in second innings? I'm not going to answer any Akshar Patel questions because I have a slight bias there. So Nikhil Bhai will take this one. See, the conditions are chilly. जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो हमें नहीं पता कि कितना पहले तो कौन खेलने वाले कि नहीं। जितना मैंने पढ़ा है संजू सैमसन इज प्लेइंग एंड देयर Hmm. आर लॉट ऑफ चेंजेस। तो पहले कौन बाहर गया है वो देख लेते हैं, फिर मे बी वी कैन टेक अ कॉल कि भाई कौन नहीं खेल रहा है। तो पटेल खेल रहे हैं बापू, पर Hmm. यूजली आवेश और ऋतुराज नहीं खेल रहे, एंड हर्षल बिश्नोई एंड Oh, संजू इज बैक। So does that okay. mean Sanjay Samson is opening? I have no clue. पर again very good game for Grand Leagues, क्योंकि वापिस दीपक हुडा ओपन करेंगे क्या हमें नहीं पता। Okay, that should be interesting then. So बहुत सारे changes हैं, and if you have all the changes, please put them in the comment section. You will help us there. Yeah. And Sanju is playing. Yes, Sanju is playing. Harshal and Thank Bishnoi you. both are playing. One interesting point is that you have to also figure out now कि अगर आपको लगता है because the more inexperienced spinner is playing, can Ireland also take over him? Can they take over a more inexperienced sort of bowling attack? Because we were relying heavily on Chahal to do well, but now if Chahal is not there, what does that mean for India? You have to think from all scenarios. हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज काफी अच्छी होगी सोचने के लिए कि चहल बॉल फ्लाइट करता है, बिश्नोई फ्लाइट नहीं करता है, फ्लैट डालता है बॉल और Hmm. गूगली डालता है काफी। तो अगर ग्राउंड शॉट है और अगर लाइन वो अच्छा करता है चहल बिश्नोई, so he could even take a 3-4 wicket haul, क्योंकि they haven't played him before much, so that Yep. will work in his favor। but अगर उसकी लाइन गंदी हो गई and if he's too short and too down the leg side, तो भी बहुत भारी पड़ सकता है। तो उसमें जैसा आपका गट फील बोले उस पर आप जा सकते हो, but he could be a very good differential pick today। Okay, I think we have got the lineups on Dream 11. So I'll just share my screen and we can look at what options we want to take in terms of the team. Yeah. So just let me know when you guys can see my screen and then we'll start. Not yet. You can now? Yeah, it's loading. Let me know if you can. Yes. Then we can start. Yeah, yes, we Okay. ठीक है. So I guess now that India is batting first, we can safely start with the batting section. And Sanju Samson should be opening as per the lineups that we have. So do you see that being the case, or do you see someone else coming in there? I think no matter whether he opens or not, you would definitely have to take Sanju.
He's been in form, has been scoring those quick 30-40s. So if that is the Hmm. case, then even if he bats, he should get to bat. The point of playing him is he is going to get to bat. So bottom line. So I think he will make a very good pick. It does decrease the potential value of DK, but I think Hmm. it's fine. Cannot do much. Okay, so we go with Sanju then. Kishan is expected to open. Any? Do we have any idea on the conditions or whether there'll be any movement up front, and that will be a crucial call on whether you Yeah, take both I the am openers or definitely not. expecting But serve movement. assuming you're playing, hmm. Sorry, Yeah, I think Nikhil, bhai, I think your audio got cut in the middle. yeah, no problem. I think there will be some movement for sure. But Hmm. you are going to hope that Kishan, in the form that he is in, finds a way out. Right. Okay, so I think we go with Kishan and Deepak Hooda or Surya Kumar Yadav, or would you like to go with both now that Deepak showed good form in the last match? Yeah, I think that it. You can probably go with more Indian batters and Ireland all rounders then. So you can probably Hmm. pick both Deepak and Sky. So that way you have the Hmm. entire Indian batting covered, and then you have to take a call whether you think Hardik will bowl in the second innings or not. Uh, Right. if you think he will, then you can take him. Else you can stick to Ireland all rounders and then Indian and Ireland bowlers. Right. So assuming that he wants to lead from the front, we can keep him for now Hmm. and then slot him out later if required. Yeah. And then you have the bowlers. I think like Nikhil bhai mentioned, Bishnoi can be a crucial cog because they have not played him before. Now, if Bhuvi's bowling in the second innings, do you see him getting any movement at all, or you feel like it would just be an over and they can play him out? I think there will be serve movement, but then it's a risk that Hmm. whether you think he'll take more than one wicket. अगर आप Right. हर्षल को ले रहे हो and you feel that Harshal will take more because he'll definitely bowl at the death for sure. So then you Hmm. can take a risky call that because you're anyways taking a call with Bishnoi striking. So Right. movie then अगर एक wicket भी ले रहे तो it will not harm you much. Correct. So I guess we can go with Harshal then for now, and that makes up seven Indian players from what we can Yes. see. So any feedback here, Nikhil bhai? Any opener or batter who you feel we can drop based on conditions, or you feel like this is the right set for now? See, if there isn't much movement, you don't think the batting will go apart from these five guys, uh, Hmm. and these five may obviously include Hardik as well, and you will expect कि डीके को थोड़ा फिनिशिंग किक मिले, पर यहाँ Right. पे वही है कि अगर आपको लगता है एक जल्दी विकेट जाएगा, तो that is something that you have to take on gut Hmm. feel के because I'm damn sure Young will strike. अब वो किनका किसका विकेट Hmm. लेगा वो मुझे नहीं मालूम, but it's a call that you can take whether. See, he can strike after the batsman has scored a 30 as well. So that is also Right. something Yeah, that to would see. be late. Hmm. हाँ, तो लेट होएगा तो डेथ में भी डालेंगे तो विकेट आ सकती है उनको तो if you feel an early wicket will fall you can drop one more one of Kishan or Samson or Deepak, but Hmm. again the batting order is very scary now uh, because you haven't seen Sanju open, so it's a very tricky call, but abhi ke liye this Right. feels more safer. Okay. So we go with that. Then who do you look at with the island bowlers? I think Craig Young and Mark Adair definitely stay in the side. Uh, Hmm. again, Mark Adair has taken a lot of wickets in the power play, and Craig Young has been in form. So Right. यहाँ पे people can easily go with Joshua Little. Hmm. Uh, First innings है, left armer है, death में भी डालेंगे ये. So he may not bowl two, but he'll still bowl one at least. So Hmm. again, it's a call that you can take. And इनके बाद you can either take Delaney Dockrell या तो फिर आप बैटिंग में से वापस ट्रैक्टर पे भरोसा करें कि अब जब चहल भी नहीं है Hmm. तो ट्रैक्टर शुड बी एबल He'll टू come प्ले good. एंड यूज Hmm. इज गुड फॉर्म एंड देन योर लास्ट पिक इज वन ऑफ द टू ओपनर्स. अगर आपको क्योंकि भूवी को नहीं लिया है तो कोई एक Hmm. ओपनर तो अच्छा करना चाहिए. तो Right. दैट्स अ कॉल दैट वी कैन टेक बिटवीन स्टर्लिंग एंड बालबर्नी. So the safer choice being Sterling for now. Yeah, So this is how yeah, it lines up for now. Samson in the keeping section. Samson has not had game time for a while, so maybe you can take a chance there. Kishan is expected to open.
Kishan has been Yes. in really good touch, and like Nikhil Bhai mentioned, even if there's movement up front, he should be able to find a way out. Surya Kumar Yadav, again similar to Samson, not had much of game time, got injured in the middle of the IPL. Deepak Hooda was a surprise package for us, came good in the first game. Yeah. And then the two Ireland batters, and we know that because Irish conditions, after you set in, is good to bat in. So we are going Yeah. with more batters for now. And Yes. then Hardik Pandya is totally your call. If you feel the Indian top order will do well, then you can leave Hardik for an extra bowler Yes. and go for the Irish all rounder. And I think the four bowlers that we have taken are pretty much staple. Maybe you have a risk between young or little. And apart from that, I guess the other Yeah. choices are pretty stable because we are expecting Ireland to lose some wickets in the middle overs. And then the captain or vice Yes. captain, who do you see as that final choice? That's where this gets very, very tricky. I, I'll be very tempted to, if you want a safe option, then Hardik and Kishan are both safe, uh, purely because of the way that they've played. Uh, Hmm. in differential options, you definitely have Craig Young as a very good option. Hmm. Again, I have hyped him so much that he'll not take any wicket and go for 40, 50 maybe. But again, you have very good options from batting section in Surya and Kishan. Vice Hmm. captain options if you want. For captains, you can definitely give it to Hardik if you feel middle overs में आके he'll bat and then probably also bowl. From Ireland, if you think wickets will fall early, you can definitely go with Adair or Craig Young. And then, like for the batting, if you feel Tector will again come good, then Tector is also an option for you. Right. So basically, we stick to this then for now, and you can take your captain or vice captain based on the choices that Nikhil Bhai gave, or if you feel like you have a safer or riskier choice, you can take that based Yeah. on the leagues that you have joined. So Yes. I think that closes the team discussion for us. Apart from that, if you guys have any other final questions, happy to take some great GL teams. So do let us know. And if you have not liked this video, not subscribed, then करो भी मत भाई अभी बहुत देरी हो गई अभी जाके टीम बनाओ and Yes. I think one Vishnu. thing that we can Hmm. definitely try is what Viren said, that in one of the teams, drop Sky, drop Sanju Samson, and make a team that still tells you that India will win, but Hmm. with different performers. Some say a Deepak Hooda coming good, and Ishan Kishan coming good, or Hardik Pandya coming good, and you can take an Umran Malik as well. Basically, just back the guys who've been in form and doing something. So in that scenario, when Harshal Patel could be a very good captain option. Usually he doesn't do well in the second innings. He Hmm. prefers to do as much ball in the first innings. But अब role change हो गया हो, so you can always back him. Bhuvi is also taken a 4 for in the second innings. So if you want to go with form, then you go make a team जहाँ पे आप in form guys जो लोग क्रिकेट खेले हैं उनके साथ जाओ. और Hmm. ये सेफ ऑप्शन तो हमने दे दिया वैसे भी आपको पहले कि दिस आर द कॉमन ऑप्शंस आपको काफी टीम्स ऐसे दिखेंगी. And I think one common factor between most of the batters and the bowlers that are playing is many of them have not had game time. So you Yeah. might see some rusty players there. So maybe you want to make some team based on just form players, based on people Yeah. who have already done well in the series or in the past series. And I think Yeah. apart from that, pretty straightforward based on the choices that you make on your GL teams or your small league teams. So I Yes. guess we'll close the discussion then. And thank you so much, everyone who tuned in till Bhai, for being so No kind. problem. Pleasure to be here. No problem. I don't think people lose out on stuff, but yes, everybody has their own way. True, very true. Great. Thank you. Thank you so much, everyone, and have a good game and all the good Yes. luck. Hopefully, good screenshots to follow. Happy winnings. Bye bye.